Bismillah. So storage, we have looked a bit high level. अभी हम इसमें there are multiple levels to go down into, but anyway, यहाँ पे जो सबसे important चीज़ हमने देखी थी कि storage name must be unique, right? अगर मैं यहाँ पे I will go into storage account, sorry. Okay, that's fine. Storage accounts, right? So if I say, let's see, want to create oh sorry, I need to switch the directory, and I will go into the current, yeah, that's fine. Create storage oh. Alright, so if we're going to create as usual subscription resource group, if I say, let's say A, B, C, D, E, F, right? Okay, it's already taken. और हमने पढ़ा था why we need to be, it needs to be globally unique, right? और ये हमने पढ़ा था कि storage account का हमें एक URL मिलता है, right? Let me just see where the URL is. It's showing the URLs. So just to show you, I'll open this in the tab. And from here, you can see I'll pick one storage account. यहाँ पे जो important चीज़ें देखने वाली वो ये है कि let's see इनके URLs, right? No, it's let me just see configuration. I'm trying to see where the URLs are of this thing. Just a moment. एक second. Okay, yeah, let me see. Where is the endpoint? Sorry, endpoints. Yeah. यहाँ पे you can see, यहाँ पे blob service का URL, आपके पास file service का, तो ये जो domain है, ये Microsoft का domain है, FQDN, fully qualified domain name. इसके अंदर it's giving you the name, right? So that's why it must be unique. It's a global क्या कहते हैं URL है, so the name you're giving becomes part of this, right? So that's why it must be unique. Okay, so ये मैंने quiz में भी question पूछा था, so please be very clear on this. Okay, why it needs to be globally unique, because Microsoft provides you the name becomes part of the URL, and so that's why the URL must be unique, globally unique, right? So that's why name must be unique. तो हम जो यहाँ पे काम कर रहे थे, यहाँ पे somebody has this one already. तो यूजुअली आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन एसटी इसका हम वो देते हैं, एब्रीविएशन देते हैं, एंड उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन नेम, लेट्स से MSFT फॉर एग्जांपल, और वी कैन डू फास्ट, राइट? एंड देन वी कैन से स्टोरेज फॉर फास्ट एंड लेट्स से फ्लेक्स, ओके, prod. This is some naming convention देते हैं, we can do 0, 1 like this. So usually this one guarantees कि ये unique होगा, right? Which it is, seems like, right? So this is how we usually name it, but
हम स्टोरेज का एब्रीविएशन है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन नेम, एप्लीकेशन नेम, एन एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल उसकी एनवायरनमेंट, प्रोडक्शन, and it could have multiple storage accounts. It's just a naming convention. But if you adhere to certain naming convention, it works out fine. You have globally unique. But main idea is to understand why it is globally unique. Okay. We have storage account बन गया. Then main thing to understand is it provides you certain services, right? I want to put this one before this one. Okay. आपको general purpose storage देता है, which you can use it for these things. Okay, blobs, files, queues, tables, and data lake storage. We did not touch data lake storage. Nothing special. It basically creates certain more different services, allows you certain different services on this, right? I don't want to touch on those things, but data lake के लिए there are certain things. For example, for hierarchy, folder level structure आप उसके अंदर it gives you for storage, right? It enables certain of those things. तो यहाँ पे it tells you, for example, let me see, right? Storage type, यहाँ पे standard है, you can go into premium. और ये जो services हैं, what we just discussing is are these ones, right? ये data storage की services हैं, containers, file shares, queues, and tables, right? I can create a table, for example. I can say users. Right, and then in this table, for example, I can use the API and I can do whatever I need to, right? I can create the rows and columns and I can store the data, right? Same thing in the queues. I can create queues and then use the API to deal with it. Then I have file shares and containers. और ये हमने पढ़ेंगे, हमने पढ़ा था कि what they're used for, right? फिर इसमें premium भी है, premium file shares, premium blobs, and premium blobs, right? And this is for high performance scenarios. Somebody has a question? नहीं, it's not the matter of unique. आप उसका URL आपको देते हो उसका, ठीक है? अब API जो है, for example, ये जो API है, if I do this, Azure Storage API, right? आपकी कॉल जो होगी उसकी जो API reference है, let's say, let me not instead of doing REST, I want to do C#, storage API, let's say C#, right? You can do Python, you can do whatever, right? तो यहाँ पे जब आप अपने कोड के अंदर इसको लिखते हो, whatever that this thing is, right? तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने अकाउंट नेम दोगे यहाँ पे इसको, राइट? अकाउंट नेम, एंड दिस इज द मेन पार्ट, राइट? आप इसको क्रेडेंशियल्स दोगे अपने, सो इट गोज टू दैट URL, to that storage account name, and it checks if you have authorization to do something, right? That's all it matters. So nothing really special, right? Then uniqueness is in the name of the storage account, right? अब उसके बाद आपने अगर API से create करना है, अगर आप API से create कर रहे हो, यहाँ पे for example, if you do this one, right? If it fails, you need to handle the exception in the code because of it was already used, right? Yes. तो लेकिन यहाँ पे यू आर नॉट क्रिएटिंग अ न्यू वन, यहाँ पे तो सिर्फ आप रेफरेंस लेके आ रहे हो, यू आर क्रिएटिंग द क्लाइंट फॉर दिस स्टोरेज अकाउंट नेम, आई थिंक, राइट? Let me see. This is a way you are creating a new connection. You're not creating a storage account, right? But you can do that one. Right? You can create all these things, but यहाँ पे all you're doing is you connect to the storage account, right? Here you have different things. If you want to create a storage account, you don't connect. You will create an Azure from Azure API one level above to create a storage account, right?
but this is you're using the storage account. आपने create कर लिया है, you're using the storage account. Okay, you're connecting it. You're creating the client object that is connecting with this one. Then you can do whatever, right? जरूर. For example, if I want to list the blob, right? ये तो वही क्या कहते हैं वही है. यहाँ पे it's going over, right? So यहाँ पे essentially it's getting the list of all the blobs, right? So ये इसका वो है क्या कहते हैं track h block के अंदर किया हुआ है, and they're getting the let me see what is the result segment, right? तो वो कह रहे हैं कि get blobs, right? From the ये जो client हमने पहले बनाया था जो connection किया था ना उसमें हम कह रहे हैं get blobs async, right? This is the way to get the in an asynchronous mode. If you want, you can get I think get blobs as well instead of doing the async code, and then you just iterate over them and do it, right? So this was just a client. Here is the आपका client object है, right? जिसने connect किया हुआ storage account के साथ. You just ask him to get blobs, right? And here are all the blobs in that folder, right? Right? So client object था, you connected with it, and then you can use it to get the files, queues, tables, whatever, right? I mean, same thing using anything else, right? ये blobs थे, you can get, for example, let's see, what else is there? और इसमें different वो हैं, क्या कहते हैं? Right? ये देखो get blobs भी है, get blobs async भी है. Async is again is a multi-threaded. You don't wait for it. It can tell you back using a callback if you want to do async programming or multi-thread programming. When the call comes, you can then go and do the work, right? I don't want to go into that one multi-thread programming, but इन्होंने आपको synchronous and asynchronous functions दिए हैं सारे के सारे, right? So to help you develop your code, right? It makes it very very easy to do async programming with these things. So again, this was just the client object. Okay, you're creating a client object. You're not creating the account. So again, ये standard थे हम जो use कर रहे थे, and premium के अंदर you the same thing. We haven't touched too much into these in the premium ones. It's a high performance if you want to use these things. Then we come to the another important part of this one, which is basically the redundancy, right? आपके पास LRS, GRS, ZRS and GCRS, ठीक है? क्योंकि जो हम स्टोरेज अकाउंट का जो नाम है माइक्रोसॉफ्ट जो हमें स्टोरेज अकाउंट का नाम है इट बिकम्स पार्ट ऑफ द URL. तो URL जो है स्टोरेज का URL है. अब फॉर एग्जांपल जो URL है फॉर एग्जांपल अब URL जो है फॉर एग्जांपल file.core.windows whatever, I'm not sure if it's the correct one but whatever, जो भी आप अकाउंट नेम देंगे इट विल बिकम लाइक दिस. जो उसका URL है स्टोरेज का इट विल बिकम लाइक दिस, ठीक है, जो आप अकाउंट नेम दोगे. तो एज यू कैन सी द URL इट मस्ट बी यूनिक. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. इट कैनॉट बी कि मैं किसी ने बनाया हुआ है फॉर एग्जांपल api.google.com और मैं कहूँ जी मैं भी बना रहा हूँ अपने उसके अंदर api.google.com, right? It's not possible to have two same URLs, right? Because each URL maps to a specific IP address. तो आप किसी का अकाउंट नेम यू कैनॉट टेक इट, राइट? तो आप जब बना रहे हो अपना अकाउंट नेम स्टोरेज अकाउंट का, that becomes part of the URL to access that storage account. So it must be unique, right? Because you cannot have two identical URLs. You cannot have two identical URLs. तो Microsoft checks कि उनके database के अंदर does this account name exist or not. So Microsoft guarantees
that, or it makes sure you cannot create a URL that is taken already. So storage account, it confirms that one, right? It makes sure it verifies that part. Then there are four options, right? LRS, ZRS, GRS, and GZRS, right? Don't worry about this part. I want to actually remove this column. I will remove this one so it doesn't confuse you guys. Durability part. अगर मैं LRS करता हूँ for example, you can see this option goes away. ये जो last option थी. GRS के अंदर आपको read access देता है, right? आपको zone के अंदर there is no read access, and GZRS के अंदर there is a read access, right? तो that tells you दोनों GRS के अंदर जहाँ पे जियो redundancy है वहाँ पे read access दे रहा है, not in a zonal copy, ठीक है? This is an important part. So let's look at क्या है ये LRS. So this is LRS. 3 copies हैं इसकी storage की in a single data center, in a single region, single data center. आपकी 3 copies हैं, ठीक है? And you can assume probably that these are on 3 different fault domains, right? Or fault domains are essentially 3 different parts of data center with unique storage, cooling, and power, right? So if this copy goes away, you can use this one and this one in case these two go away, right? So this is the idea. ZRS is essentially the 3 data centers जो 3 availability zones होती हैं एक region के अंदर, and availability zone is nothing but a single data center. तो ZRS के अंदर ZRS is essentially उसमें आपकी 3 copies होती हैं in 3 different data centers, which are essentially 3 different availability zones, right? So availability zone is a logical name of the data center. अगर कहते हैं availability zone 2, for example, if I do this, right? If I say ZRS, right? I'll just make it something. I want to show you. मैं देखना चाह रहा हूँ इसके अंदर ऑप्शन है. Just 1 second. ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दे रहा कुछ भी विच जोन, राइट? क्योंकि उसने 3 कॉपीज बनानी है. सो ऑटोमेटिकली व्हेन यू डू ZRS, it gives you 3 copies in 3 different availability zones, right? In the so which are just 1 second, guys, just a moment. एक second, guys, just 1 moment, 1 minute. Okay. Sorry, I'm just going to pause for a second. Okay, guys. So ये था ZRS. Then we come to GRS. So it's LRS in the first data center in the first region and then in the second region. Okay? Now we are going across regions. Okay? Understand this. So there are 2 LRS basically. So it basically doubles the cost. ये double से ज़्यादा cost होती है because it copies also and does this one. Okay? And यहाँ पे जी yeah, we don't call it availability zone in that case. We just say one single data center, right? जब हम ZRS कहते हैं, then we say yes, this is, so yes, it is an availability zone for all practical purposes, but that concept is not there.
राइट, हम सिर्फ कहते हैं डेटा सेंटर इन अ सिंगल डेटा सेंटर, ठीक है। ओनली व्हेन ZRS हम कहते हैं, देन वी से यस इट इज पार्ट ऑफ एन अवेलेबिलिटी जोन, राइट। But yes, the concept is same because availability zone and data center are synonymous. ठीक है, they are one and the same thing. But हम उस concept नहीं लेके आते when you're doing LRS. हम zonal concept को नहीं लेके आते उसको दरमियान में, ठीक है, in a single region, right? दिस इज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कोर्स हमने रीजन्स पढ़े थे। रीजन होता है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था, जिस तरह दुबई इज वन डेटा सेंटर इज वन रीजन। अब मैंने यहाँ पे बताया था आपको अगेन, दिस इज अ रीजन, राइट, दिस इज फ्रॉम द वेरी फर्स्ट और फ्यू स्लाइड्स, ये रीजन है। एंड देन रीजन के अंदर ईच रीजन हैज थ्री डेटा सेंटर्स, राइट, ईच रीजन हैज थ्री। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल I can have Qatar also. Each region has three data centers, right? I have, for example, if I say UAE, for example, over here, if I say UAE, let's see, other, आप यहाँ देखो for example, और क्या data centers हैं, let's say, if I say, let's say Europe, right? अब यूरोप के अंदर you can see there is West Europe है and there is North Europe, right? This is a region. So इसके अंदर basically for example, अब अबू धाबी दुबई के अंदर मेरा ख्याल है, यूएई के अंदर मेरा ख्याल है अबू धाबी के अंदर कोई डेटा सेंटर है, तो अबू धाबी के अंदर there are three data centers basically, right? And each one is basically part of that availability zone. तो अगर आप कहते हो कि मुझे एक उस रीजन में चाहिए एंड यू डोंट वांट जोनल रिडंडेंसी, इट कैन पिक वॉट एवर डेटा सेंटर। एक उन्होंने प्राइमरी डेटा सेंटर रखा होगा वेयर दे गो बाय डिफॉल्ट, राइट, टू डू दीज थिंग्स। बट रिगार्डलेस, when you don't pick the zonal redundancy, it can give you your services in any one of those data centers, right? This is the idea. एक उन्होंने प्राइमरी बनाया होता है विच इज द बिगेस्ट वन, और फिर आपको जहाँ जोनल रिडंडेंसी चाहिए होती है, दोज आर द स्मॉलर वंस, राइट, क्योंकि जनरली ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली। हाँ, एक हमने सबसे पहले डेटा सेंटर का आर्किटेक्चर पढ़ा। नाउ वी आर गोइंग वन लेवल अबव एंड वी आर लुकिंग एट द रीजन का हम उसका आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं। उसके अंदर तीन डेटा सेंटर्स हैं एंड वी सेट अप द सर्विसेज यूजिंग जोन रिडंडेंसी। और वो आई मीन डेटा सेंटर्स का जो आर्किटेक्चर है इट रिमेन्स लाइक दैट फॉर ऑल थ्री डेटा सेंटर्स, राइट, उनकी वही रिक्वायरमेंट्स हैं, राइट। यहाँ पे अगर आप जाओ एज योर रीजन्स, I mean, region is essentially for all practical purposes a city with three data centers, right? तो इसके अंदर उनकी certain requirements होती हैं and I think it needs to be at a certain level. Yeah, I think this is one single data center, right? मैं anyway I will see, right, कि मैं आपको दिखाऊं अगर उसका, but regardless you get the idea. It's basically one single city with three data centers at certain distance and all that, right? और वो दूसरे दो यूजुअली आर स्मॉलर, राइट, क्योंकि आपकी जो प्राइमरी डेटा सेंटर है दैट इज गोना बी द बिगेस्ट वन, क्योंकि बिकॉज मे बी लेस देन 50% ऑफ द पीपल
want to have zonal redundancy, then further smaller number needs a geo redundancy, right? Anyway, let's continue. यहाँ पे रीड एक्सेस दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि this is the same thing, but read access allows you to do reading from over here as well, right? This is what it's saying basically. Sorry. Just a moment. Right. So आपको इस डेटा सेंटर में से you are able to do reading. So ये बहुत बच्चों ने क्विज के अंदर they wrote this whole thing. Understand what they're saying. They're saying this is GRS. ये ब्रैकेट में read access means के if you are doing read access, then you can do read access from over here also, right? और यहाँ पे Azure के अंदर when you're doing this one, when you do GRS, ये आगे read access, okay? You have this one over here. यहाँ पे again same thing. ये GZRS है, and this is GZRS है ये, ठीक है? Then you can do read access on top of this, right? Yeah. Right? You can do read access on top of this one, okay? Anyway, so you can do read access. So understand what they're saying. बहुत बच्चों ने in the quiz के अंदर भी they put lot of this stuff over there without thinking, right? So understand what they're trying to show you multiple figures over here, ठीक है? कि अगर आप GRS करोगे या GZRS करोगे, right? Read access. So this is what they're trying to show you. ये मैंने वो किया हुआ है, breakdown किया हुआ है basically. So this picture is, let me just change this one, right? This is GZRS. And with read access, okay? And read access means कि इसके अंदर basically यहाँ पे you are doing the reading if you want that, okay? So again, geo-redundant, ZRS and GZRS. So GZRS is यहाँ पे आपकी हर जोन में कॉपी है, so it's ZRS plus geo redundancy, right? So this is like this, right? Again, straightforward, nothing special. यहाँ पे उन्होंने फर्दर क्लैरिफाई किया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे और ये बता रहा है कौन सा सिंक और ए सिंक हो रहा है, ठीक है? बट एनीवे जीआरएस में सारा दूसरे रीजन के अंदर इट्स ऑलवेज ए सिंक, राइट? एंड यू कैन से टिपिकली ग्रेटर देन 300 माइल्स, सो देयर इज सम लेटेंसी, बट रिगार्डलेस यहाँ पे आपको रीड एक्सेस मिली, यू आर एबल टू रीड ओवर हियर व्हेन यू आर डूइंग रीड एक्सेस, ओके? यू आर एबल टू रीड ओवर हियर व्हेन यू आर डूइंग जीसीआरएस एंड आरए, राइट? So this is the main part to understand, right? Then we come to Azure Storage Services. यहाँ पे हमने कहा कि इसकी 3 सर्विसेज हैं जो हमने यहाँ पे भी पढ़ी थी, ब्लॉक, हाँ जी, can second region become primary? No, second region is the second region. Primary means आपके 2 region हैं, right? The second region can become active. We don't call it in our terminology कि it has become a primary region, right? So just one second, right? We don't say it has become primary. We say it has become active, right? Secondary has become active, not that it's become primary. But idea is same. It is the active one, right? तो आपका बेसिकली जो URL है ना, स्टोरेज का URL,
वो आपके प्राइमरी रीजन के आईपी से शिफ्ट होकर सेकेंडरी रीजन के आईपी के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. दिस व्हाट विल हैपन, राइट. आपका स्टोरेज अकाउंट है वहां पे प्राइमरी में, राइट. तो उसका इंटरनल आईपी होगा समथिंग, राइट. और सेकेंडरी का होगा, राइट. एंड दिस विल बी योर, फॉर एग्जांपल, dot I mean, I am just speculating, but this is most probably what's happening. ये चीजें, think through these things, right? कि what is happening. So if this one goes down, Microsoft ने क्या करना है, इसको यहाँ से उठा के ना, इसको उसने इसको यहाँ पे कर देना है, इस वाले आईपी के ऊपर, राइट. तो आपकी एप्लीकेशन अब इसको कनेक्ट करेगी ना, इट विल बी गोइंग टू द सेकेंडरी रीजन. दिस इज व्हाट विल मोस्ट प्रॉब्ली इज हैपनिंग. ठीक है. एंड दैट, नहीं नहीं, it's just that it's an additional functionality. ठीक है. हमेशा नहीं है, it's an additional functionality that you're requesting. आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो उसके, राइट. नहीं, देखो, मैंने इसकी लॉजिक आपको बताई थी कि हम रीड एक्सेस क्यों करते हैं सेकेंडरी से. मैंने बताया था कि, और ये डेटाबेसिस के अंदर भी है, अगर हमने रिपोर्टिंग करनी है, अगर हमने किसी और रीजन के अंदर डेटा अवेलेबल करना है फॉर रिपोर्टिंग एंड फॉर रीडिंग एंड फॉर वॉट एवर पर्पजेज, राइट, एंड फॉर बैकअप्स एंड वॉट नॉट, वी कैन डू रीड एक्सेस ऑन द सेकेंडरी. ठीक है. हम लोड बैलेंसिंग के लिए तो नहीं कर सकते. लोड बैलेंसिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट इज ऑलरेडी डूइंग इट, क्योंकि प्राइमरी के ऊपर 3 कॉपीज तो बन रही है ना हमारी ऑलरेडी. वी नो दिस थिंग ऑलरेडी. वहाँ 3 कॉपीज हैं हमारी, और माइक्रोसॉफ्ट इज प्रोवाइडिंग ऑल द सर्विसेज. वी डोंट नीड टू लोड बैलेंस एनीथिंग. स्टोरेज में तो सिर्फ अवेलेबिलिटी चाहिए, एंड वी गोना पुट सर्टन लोड ऑन इट. तो हम ये कह रहे हैं कि प्राइमरी के ऊपर लोड ना पड़े रिपोर्टिंग का, डेटा रीडिंग का, एंड ऑन सो ऑन, राइट. क्योंकि उसके ऊपर एप्लीकेशन चल रही है. एप्लीकेशन इज रीडिंग एंड राइटिंग. सो हम प्राइमरी जो स्टोरेज है उसके ऊपर वी डोंट वांट टू पुट एक्स्ट्रा लोड ऑफ रिपोर्टिंग एंड एनी काइंड ऑफ डेटा एक्सट्रैक्शन. तो हम सेकेंडरी को कहते हैं कि सेकेंडरी से वांट रीड एक्सेस, राइट. सो दैट्स द मोटिवेशन ऑफ दिस वन. वरना इट्स सिटिंग इन अ डिफरेंट डेटा सेंटर, राइट. हमारी एप्लीकेशन शुड नॉट बी गोइंग टू 2 डिफरेंट डेटा सेंटर्स. और एप्लीकेशन इज, नहीं नहीं, यार आइडिया इज कि आपको यहाँ पे you want the application to be able to handle data center failure and zone failure. ठीक है. अब यहाँ पे it doesn't make sense. क्यों? क्योंकि if यहाँ पे आप कह रहे हो फॉर एग्जांपल एक कॉपी बना रहे हो किसी और रीजन के अंदर, अब वहाँ पे यहाँ पे डिजास्टर इज बिग इनफ. फॉर एग्जांपल यहाँ पे थिंक अबाउट इट, होल सिटी इज गॉन. तो डिजास्टर रिकवरी की जो स्ट्रेटजीज होती हैं जनरली स्पीकिंग, आप कहते हो एक कॉपी दूर रहे मेरे से, राइट, एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस वन. तो यहाँ पे जो कैटास्ट्रॉफिक नेचर है, यहाँ पे यूर सेइंग आई वांट टू बी एबल टू हैंडल डिजास्टर ऑफ अ डेटा सेंटर एंड अ रीजन विच इज प्रीटी मच अ होल सिटी, राइट. तो यहाँ पे आई एम जस्ट कीपिंग माई डेटा, आई जस्ट वॉन्ट माई डेटा टू बी सेपरेटेड. उसमें वो नहीं होता कि आई वॉन्ट टू बी एबल टू फर्दर क्या कहते हैं सेपरेट माई डेटा. आपने कॉपीज बनानी, आप बना लें और कॉपीज उसकी, राइट. बट द सर्विस सेज फॉर अ डिजास्टर रिकवरी
आप मिनिमल पॉसिबल सर्विसेज इनेबल करते हो इन अ रिमोट, सो यू कैन कम बैक ऑनलाइन. इट अलाउज यू कम बैक ऑनलाइन, not necessarily to run your services all of them back again at the same level, right? तो यहाँ पे डीआर के अंदर, बिकॉज अदरवाइज कॉस्ट इज वेरी वेरी मैसिव अगर यू स्टार्ट बिल्डिंग द सेम थिंग, राइट. बैकअप का भी, बट ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल आई एम एबल टू रन माई एप्लीकेशन, बट द पॉइंट इज आपकी जो सारी स्ट्रेंथ होती है वो आप यहाँ पे लगाते हो प्राइमरी डेटा सेंटर के अंदर सारे रिसोर्सेज, राइट. You DR is never built like the primary, generally speaking. आप उसमें कहते हो हाउ कैन आई डू बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, मेरे कोर सिस्टम्स चलते रहें, बट यू डोंट वांट टू बिल्ड DR also at the same scale as your primary, right? But यहाँ पे this will be more than enough to have this thing, right? To continue with my business, right? तो यहाँ पे यार फिर हम डेटा कॉपी, वी रेप्लिकेट द डेटा उसके अंदर, जो सेकेंडरी जो कॉपीज है ना, सॉरी, वहाँ पे एप्लीकेशन विल बी डिप्लॉयड, उनका स्टोरेज अकाउंट होगा, एंड देन व्हाट वी डू इज वी सिंक्रोनाइज द डेटा बिटवीन स्टोरेज अकाउंट्स. दिस इज व्हाट वी डू, ठीक है. वी डोंट, क्योंकि यहाँ पे इफ यू हैव, और जनरल लिमिट जो होती हैं एप्लीकेशन डिप्लॉय होती हैं, देर इन 5-10 डिफरेंट रीजन्स, राइट. तो उसके लिए व्हाट वी डू इज वी हैव सेपरेट स्टोरेज अकाउंट्स विच आर सिंक्रोनाइज्ड, डेटा इज सिंक्रोनाइज्ड बिटवीन ऑल ऑफ देम, right? This is what happens basically. Not this is a DR, right? Not a strategy to replicate data all everywhere across all regions, across all my different installations of my application. This is a DR strategy, business continuity strategy. Data sync is a totally separate thing, and we have very nice solutions for that as well. नहीं, यहाँ पे uh, I think you can do data sync. There are you can do there data sync, and you can do various different things. Your file sync भी है, and इसके अंदर blob synchronize भी हैं, and various different things, right? You can do, there are many ways to synchronize stuff in storage accounts, right? Again, let's focus. We have too much stuff to cover, right? I don't want to go too much into details of this thing. We have two more slide decks, but these are all very critical discussions when you're designing the solutions, right? But this one, understand, this is only आपकी जो application जो deploy हुई है, this is only to make sure it doesn't go down. How you synchronize, that's a separate thing, right? We haven't touched that subject, generally speaking. But there are a lot of tools to synchronize multiple, क्योंकि वहाँ भी तो then वहाँ भी data create हो रहा है. You have to synchronize that back over here and this one over there, right? So a lot of stuff needs to happen, right? ये हमारी तीन सर्विसेज थी, कंटेनर, स्टोरेज एंड फाइल्स, एंड दीज आर बेसिकली ओवर हियर. यहाँ पे कंटेनर, दिस वन, क्यूज, टेबल्स एंड ऑल दैट, राइट. इसके अंदर बेसिकली फाइल शेयर्स बनाते हो, एंड फाइल शेयर इज एसेंशियली SMB. यूजिंग SMB प्रोटोकॉल इट अलाउज यू टू शेयर. डिस्क आर, अगेन ये मैंने बताया था, मैनेज डिस्क होती हैं, एंड इट हाइड्स द स्टोरेज अकाउंट, एंड आपको डायरेक्टली इट अलाउज यू टू क्रिएट डिस्क. ठीक है, यहाँ पे कॉम मैनेज डिस्क आप लिखो यहाँ पे, disk, right? You can directly create disks. Or why it is under storage? Because behind the scenes it's using storage account, but it's hidden from us, right? You can do this one, right? And you can do all of this stuff.
and you can say premium, standard, whatever, right? नहीं, I said वो storage account का बनता है और इसमें we are not creating storage account. Microsoft handles this behind the scenes automatically, so we are not concerned with that. ठीक है? But yes, but you don't see it. You don't deal with the storage account. Okay? ये मैंने क्लास में बताया था इसमें डिटेल्स में. It's called a managed disk because its storage account is being managed by Microsoft and it's invisible to you. ठीक है? ये जो आपको नेटवर्किंग दे रहा है बिकॉज देयर इज स्टोरेज अकाउंट बिहाइंड द सीन्स, वरना डिस्क का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि हु कैन कनेक्ट टू इट, राइट? इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ इट एग्जिस्ट इन अ स्टोरेज अकाउंट, बट इट्स मैनेज दिस बिकॉज वी हैव सेड कि इसका जो स्टोरेज अकाउंट है दैट इज इनविजिबल टू यू, यू डोंट डील विद इट, Microsoft deals with it, right? So it creates some random thing, something, right? Maybe behind the scenes. Azure Files main thing is it's using SMB protocol. Okay. ये unique URLs थे which I was trying to find actually. इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ actually. Anyway, I'll do it later on. I'll put these slides together actually, same ही content है इनका. उसके बाद मैंने बताया था you can do इसको CNAME record बना सकते हो आप custom domain लेके आ सकते हो इसके अंदर. So if I go back यहाँ पे, if I do this in the networking part, so networking, I can do custom domains. Right, and it tells you right away कि CNAME record बनाना है आपने, right? जो आपका नाम है उसके ऊपर, और आपने CNAME का जो IP एड्रेस मैप करना है वो ये करना है या ये करना है. ठीक है, ये देखो बता रहे हैं आपको कि ये जोन 1 में बना हुआ है, राइट? तो so by default zone 1 it seems these are the things to make a note of it, right? ये आपको कहीं ना कहीं पता लग जाता है कि zone 1 is the primary zone where everything is being created, even though it's not zone redundant, right? But Z1 is set as the primary zone because it needs to go in one of the data centers in the region, right? वो बता रहा है आपको subdomain. So this is how you would do this thing, okay? So CNAME record is the important thing. आप इसको जो मर्जी बना लो, and you can give this one as the target. CNAME record बनाओगे, and again it's a CNAME because it Microsoft gives you an existing URL which you need to rename. ये same question था जो उसके अंदर आता है, app service के अंदर आता है, and same thing as here as well. ठीक है? This is something you can read, nothing special over here. Again, this kind of main difference है, blobs are not shareable. This is shareable using SMB, right? Again, the APIs are same, REST-based APIs. We don't use REST-based, we use the coding APIs, right? From the .NET libraries or Python library and whatnot, right? But it is all, everything is based on HTTPS and REST APIs, right? और ये scenarios हैं. कॉन्सेप्ट नहीं है ना उसका, तो उसका शेयरिंग का, जो शेयरिंग का है वो फाइल्स के अंदर है. फाइल्स आर इन ब्लॉब्स एंड फाइल्स, तो उसके अंदर वो कह रहे हैं कि एसएमबी प्रोटोकॉल इज इम्प्लीमेंट बाय दोस थिंग, राइट? तो कंपैरिजन भी फाइल्स और ब्लॉब्स का, बिकॉज सेम थिंग्स कैन गो इन बोथ प्लेसेस, राइट? जो आप डाल रहे हो फाइल्स, ऑडियो वीडियो फाइल्स में भी जा सकती हैं, बट जनरली वी पुट देम इनटू ब्लॉब बिकॉज इट इज मेंट फॉर स्ट्रीमिंग एंड रैंडम एक्सेस, राइट? But if you want to share audio and video as well, you will put in Azure Files, right? तो queues और उसका तो comparison ही कोई नहीं है इनके साथ, right? Because वो API access है उसके ऊपर, straight, right? उसके अंदर कोई sharing का concept नहीं है. I mean, nor it is there, right? It's only APIs. जिस तरह मैंने आपको दिखाया था, I was doing it, and it table का नाम मैंने बताया था, उसके अंदर कुछ भी नहीं था, और nor I can create the structure, right? तो सारा APIs के साथ होते tables and queues के अंदर. Let's continue. I spent too much time on these things.
फिर हमारा है फाइल्स, ये कंपैरिजन द फाइल्स ऑफ ब्लॉक, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ये मैंने कई दफ़ा रिट्रेट किया क्लास में भी, राइट, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस वन. When you come to Azure File Sync, Azure File Sync basically it allows you to synchronize on-premises from various different offices, from various different data centers to a central location. कोई भी चीज़ कहीं पे change होगी, it will get synchronized with the central location on the cloud. ठीक है? And vice versa. एक आपका agent है which gets deployed on each of the local server. ठीक है, each of the local server, और वहाँ से वो whatever changes are it gets synchronized. फिर storage को we can select who can connect to it, so we can select basically if you networking के अंदर you can connect, so enable from everywhere public network access. You can say I can access from selected virtual networks and IP addresses. इसमें you can add virtual network, add new one, add existing one, and this is a public IP. ये मेरा IP address इस वक्त का दिखा रहा है, so I can do this one, right? And everybody else I can block. Also, you can allow कि जी Azure services हैं, they can connect to this one. Regardless of these settings, Azure services can connect to it, right? So these are three settings that we need to understand and make sure, right, for accessibility of storage accounts. फिर हमारी टीयरिंग है हॉट, कूल एंड आर्काइव. सो ये हम किस वक्त करते हैं, व्हेन डेटा इज़ आपका एक आध दफ़ा आपने महीने में आपने एक्सेस करना है, यू नीड टू मूव इट टू कूल टीयर, और आर्काइव टीयर 6 महीने में एक आध दफ़ा आपने करना है, देन यू मूव इट टू आर्काइव टीयर, राइट. ये ब्लॉब्स के लिए है बेसिकली, एंड यू कैन सेट, राइट, ब्लॉब्स की टीयरिंग आपने क्या करनी है. जी, उसका मैंने बताया था नेटवर्किंग के ऊपर, राइट. इसका मैंने बताया था यू कैन एक्सेस फ्रॉम, either you allow all access or you say I can select from specific VNets. So I can say existing virtual network, and I can say VNet 1, and from here I can say either I can select all or I can say specific. Okay, so now it will only get accept traffic from this VNet and this subnet and from nowhere else. Okay, or last but not least, I can specify specific IP addresses to do this one, for this one, ठीक है. From public, I can अभी public IP public access disable हुई भी है, I need to allow public. So generally this is all what we do. हम कहते हैं public access disable है, disable means I have not allowed anything and I have allowed only internal access, ठीक है. और उसके अंदर फिर ये मैं आई कैन डू दिस वन एज वेल, राइट, कि मैं एजर की कोई सर्विस इट कैन नॉट एक्सेस, बट जनरली सिंस एजर सर्विसेज नीड एक्सेस, सो वी अलाउ दिस एक्सेप्शन, ठीक है, कि बिकॉज अदरवाइज वो सिर्फ यहाँ से कनेक्शन अलाउ कर रहा है. सो एजर सर्विसेज ऑफ कोर्स दे विल कम ओवर सम इंटरनल नेटवर्क, सो वी वांट टू अलाउ दिस वन, राइट, ताकि एजर सर्विसेज कैन एक्सेस दिस स्टोरेज अकाउंट. ये डिफरेंट टीयर्स हैं एंड यू कैन स्विच बिटवीन टीयर्स बेस्ड ऑन डेटा, कॉस्ट कम हो जाती है आपकी काफ़ी ज़्यादा ना, सो दैट्स व्हाई यू हैव दीज थिंग्स, राइट. आपने डेटा आर्काइव करना है, आपकी ज़्यादा यूजेज नहीं है, मे बी यू फील वंस इन अ वाइल यू विल एक्सेस इट, पुट इट टू कूल और डू इट टू आर्काइव. समटाइम्स रेगुलेशंस होती हैं कि आपने एक डेटा 5 साल तक रखना है, 7 साल तक रखना है, लीगल रेगुलेशंस होती हैं, देन यू नीड टू मूव इनटू आर्काइव टीयर. और ये ब्लॉब लाइफ साइकिल मैनेजमेंट रूल्स हैं. यू कैन पुट कि अगर लास्ट मॉडिफाइड इफ इट्स मोर देन 6 months और 3 months और वॉट एवर 30 days 60 days, मूव इट टू कूल, डिलीट इट, आर्काइव इट, कूल स्टोरेज में कर दो, वॉट एवर, राइट, बेस्ड ऑन योर यूजेज, बेस्ड ऑन योर नीड, यू नीड टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट.
Essentially, it's a very critical thing for cost management. Otherwise, data increase होता जा रहा है, it will keep on increasing the cost. अभी कल परसों हमारे कस्टमर की ईमेल आई थी, उन्होंने कहा कि हमारे स्टोरेज की कॉस्ट $10,000 इंक्रीज हो गई है इस महीने, यू वांट टू चेक. I mean, we have discussed before with them also, but they never set any kind of rules. And this is what happens when you have terabytes and petabytes of data, right? You can have huge, huge cost increases like this, right, on a monthly basis if you don't manage this thing properly. So this is very, very critical. And this is basically how do you आप उसको किस तरह मैनेज करते हो, राइट, सॉरी, किस तरह कॉपी करते हो. एजी कॉपी, very nice tool. This is for massive uploads. We use AZ copy. Now Azure Storage Explorer also uses AZ copy underneath, right? Azure Storage Explorer is a free tool. You can download. It's a very, very nice tool. I think मेरे पास है यहाँ पे. Many different accounts and all those things. I don't want to go into my customer key subscriptions actually. If I go back, I just want to show you क्या आपको allow करता है basically. Just 1 second. मैं देखना चाह रहा हूँ मेरी कौन सी सब्सक्रिप्शन है यहाँ पे where I can. Anyway, let me just go over this one quickly. I don't want to spend too much time. यहाँ पे मैं देख लूँगा स्टोरेज अकाउंट है. So you can see यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट्स हैं. For example, यहाँ पे this शो कर रहा है, and it can do, for example, let me see if I allow me to do something. Anyway, I don't want to. Let's go. Anyway, so this is a tool to manage this one. Okay, I don't want to spend too much time on this one. So ये storage explorer है. You can go into, you can do upload, download, whatever, right? And uses AZ copy to handle this one, right? And then file sync is to synchronize in this bi-directional manner, okay? From over there and from on-prem to cloud and cloud to on-prem. These are basically to copy large files very quickly using the maximum bandwidth basically, right? So that's it basically on storage.
But these are the main things, right? Key takeaway points basically that we need to make sure we remember on this one.